हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन बी, पोइट्री, और टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच एंड पोएटिक डिवाइसेस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। बिफोर वी स्टार्ट पोएटिक डिवाइसेस एंड फिगर्स ऑफ स्पीच, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पोएटिक डिवाइसेस एंड फिगर्स ऑफ स्पीच क्या हैं। पोएटिक डिवाइसेस Poetic devices are a form of literary devices used in poetry. It is a deliberate use of words, phrases, and sounds, and even shapes to convey meaning. Poetic devices words and phrases हैं जो कि meaning convey करते हैं. For example, alliteration, simile, metaphor, irony. उसके बाद है figures of speech. फिगर्स ऑफ स्पीच का मतलब है कि वर्ड्स का यूजेस कि जिसकी फिगरेटिव मीनिंग हो, ना कि लिटरल मीनिंग हो. फॉर एग्जांपल, एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, आयरनी, हाइपरबोले. अब हम डिस्कस करेंगे पोएटिक डिवाइसेस एंड फिगर्स ऑफ स्पीच. Poets use poetic devices and figures of speech in order to enhance the meaning or mood of a poem. Here are some essential poetic devices and figures of speech. Simile. A simile is a direct comparison between two unlike things, usually with the words like or as. For example, the muscles on his brawny arms are strong as iron bands. Simile is basically a comparison of two things by using as or like. Simile comparison है जिसमें हम as और like use करते हैं. For example, he was as quiet as a mouse. अब इसमें हमने यूज किया है as. दूसरा एग्जाम्पल है she swam like a fish. इसमें हमने यूज किया है like a fish. तो ये एग्जाम्पल्स थे simile के. Metaphor. Metaphor is an implied comparison between two relatively unlike things without like or as. Metaphor is also comparison without using as or like. अब जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द रोड वॉज अ रिबन ऑफ मून लाइट. मैं आपको और इजी एग्जाम्पल बता दूं मेटाफर के. ही वॉज अ लॉयन इन द फाइट. अब इसका मतलब है वो लॉयन नहीं है, लॉयन की मीनिंग है ब्रेव. तो ये मीनिंग कन्वे कर रहा है कि ही वॉज अ ब्रेव इन द फाइट. नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन. Personification gives the qualities of a human to an animal, an object, or an idea. Example, a brave, handsome tree fell with a creaking, rending cry. Personification कहते हैं कि जब ह्यूमन फीलिंग्स आप किसी एनिमल, ऑब्जेक्ट और आइडिया को दें. अब देखें इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि हैंडसम ट्री. ट्री हैंडसम नहीं होता, ह्यूमन बींग्स आर हैंडसम. सो अब इसमें बताया गया हैंडसम ट्री. मैं आपको और एग्जाम्पल दे दूं पर्सोनिफिकेशन के. जैसे द ट्रीज डांस इन द विंड. अब ट्रीज डांस करते हैं तो डांस जो है वो फीलिंग्स हैं ह्यूमन बींग्स की. दूसरा एग्जाम्पल है द क्लाउड्स वर मूविंग एंड डांसिंग. अब क्लाउड्स इसमें मूविंग एंड डांसिंग, दिस इज क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो ये क्वालिटी हमने दे दी क्लाउड्स को, तो इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. Next is hyperbole. It is an exaggerated statement used. Example, she has said so on several million occasions. अब देखें several million occasions, तो ये एक बात को बड़ा चढ़ा के कहना है, तो ये होता है हाइपरबोले. हाइपरबोले के और भी एग्जाम्पल है जैसे she cried a river. और दूसरा एग्जाम्पल है इट वॉज एन एंडलेस रूट, जो ना खत्म होने वाला रूट. तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमने बड़ा चढ़ा के कही हैं, एग्जेजरेशन, तो इट इज कॉल्ड हाइपरबोले. उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है alliteration. Alliteration is the repeated consonant sounds at the beginning of words. Example, wide-eyed and wondering while we wait for others to waken. अब इसमें देखें repetition of consonant sounds जो beginning में यूज हैं. जैसे wide-eyed W यूज हुआ है इसमें, wondering में W है, while में W है, we में W है, wait में W है, waken में W है. तो ये repetition of consonant sounds हैं at the beginning of words. तो ये एलिट्रेशन है. अब मैं आपसे एलिट्रेशन के और भी एग्जांपल्स शेयर कर रहा हूँ. जैसे शी सेल्स सी शेल्स एट द सी शोर. अब इसमें एस लेटर रिपीट हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स. दूसरा एक मैंने बच्चों को नॉवल पढ़ाया था, द टर्बुलेंट टर्म ऑफ द टाई टाइलर. अब इसमें लेकिन टी लेटर रिपीट हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड, एंड टी इज कॉन्सोनेंट साउंड, सो इट इज एलिट्रेशन. Next is onomatopoeia. It is a use of words that mimic sounds. Basically, onomatopoeia is a word that mimics the sound of the actual thing. Words use करते हैं वो sound होता है किसी actual thing का. जैसे example दिया गया है crackle. मैं आपको और example दे दूं. The lion roared. अब ये road जो है वो lion का sound है. The bee buzzed. अब इसमें buzz sound है वो bee का है. My phone rings. तो इसमें जो ring है वो phone का sound है. तो words like rings, road, buzzed,
These are sound of the actual things. So it is called onomatopoeia. Oxymoron, it is the contradictory words used together signifying two different but exact ideas. Examples, he is the wisest fool of them all. Basically, oxymoron involves the use of two words which appears to contradict one another, but when used together makes a true statement. ऑक्सीमोरन का मतलब है कि किसी भी स्टेटमेंट में टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स यूज होते हैं बट इट मेक्स अ ट्रू स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल शी शोड अ क्रूअल काइंडनेस दूसरा एग्जाम्पल है वी सॉ अ कॉमेडियन लास्ट नाइट ही वाज सीरियसली फनी अब देखें सीरियसली फनी या क्रूअल काइंडनेस तो ये एग्जाम्पल्स हैं ऑक्सीमोरन के नेक्स्ट इज आयरनी it is a situation that means quite opposite to what is apparently said example a post on Facebook complaining how useless Facebook is अब Facebook तो यूजफुल है इसके फायदे भी हैं तो हमने कोई पोस्ट बता दिए कि Facebook is useless. So simply we say iron is a contrast between what is expected and what actually happens. For example, the food service of the restaurant was brilliant and the plate was cold and so was the food. It means that the food was tasteless. मैं आपको इजी एग्जांपल दे दूं फॉर एग्जांपल किसी के कपड़े अच्छे नहीं हैं डर्टी हैं लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं वाओ योर अटायर इज वेरी गुड आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं तो कहने का मकसद है जो चीज हो आप उसके अपोजिट कहें तो उसको कहते हैं आयरनी उसके बाद है सिंबल अ सिंबल इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स समथिंग एल्स rather than itself. For example, a sunflower, weary of time, who contests the steps of the sun. William Blake. सिंबल कोई भी ऑब्जेक्ट होता है लेकिन वो किसी और चीज को रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट इज इमेजरी imagery is basically use of words to create an image or picture in the reader's mind based on five senses for example I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills विलियम वर्ड्सवर्थ इमेजरी का मतलब है कि वर्ड्स यूज किए गए हैं और जिसकी वजह से आपके माइंड में कोई इमेज या पिक्चर क्रिएट हो I wandered lonely as a cloud. It means I wandered lonely as a cloud. मैं बादलों की तरह घूम रहा था. Exercise 1. Answer the following questions. Write down your answers in your notebook and share it with your class fellows once you have completed. अब ये 5 क्वेश्चन हैं और ये हम डिस्कस करेंगे. Question number 1. What is meant by rhyme in poetry? Answer. Rhyme is the use of similar sounding words in lines of words. Question 2. What is meter in poetry? Answer. Meter is a unit of rhythm in poetry, the patterns of the beats. It is also called a foot. Each foot has a certain number of syllables in it, usually 2 or 3 syllables. The difference in types of meter is which syllables are accented or stressed and which are not. Question 3. What are different kinds of stanza? Answer. Some common types of stanzas include the couplet, a stanza with 2 lines that rhyme, tercet or triple, a stanza with 3 lines that may or may not rhyme, quatrain, a stanza with 4 lines that may or may not rhyme, quinton, a stanza with 5 lines that may or may not rhyme, sestet, a stanza with 6 lines that may or may not rhyme. Question 4. What is a sonnet? Answer. The sonnet, which derived from the Italian word sonetto, meaning a little sound or song. A sonnet is a type of 14-line poem. Traditionally, the 14 lines of a sonnet consist of an octave or 2 quatrains making up a stanza of 8 lines and a sestet, a stanza of 6 lines. Basically, sonnet is a poem of 14 lines. Number 5. What is function of the poetic devices? Answer. Poetic devices are tools that poet can use to create rhythm, enhance a poem's meaning, or intensify a mood or feeling. उम्मीद है जो मैंने आज पोएटिक डिवाइसेस एंड फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस किए डिटेल में आपको समझ में आए होंगे अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टेक केयर अल्लाह हाफिज़